चेक करा के दे देना। हाँ दे अभिषेक मोलाइज करते हैं। कर रहे हैं। हाँ कर देना। खाली इसका अडेप्टर जो आता वो भी है क्या? जिसमें आता 7 वाले कार्ड लग जाए, अडेप्टर वाला लंबा हो जाता। फ्रेम सेट कर लो मेरे भाई। इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, इधर आगे आगे वहाँ रख देना पीछे। इसको आगे मत लेकर भाई, मेन दोनों खड़े। हाँ थोड़े इस तरफ। इसकी हाइट बढ़ा देंगे तो। हाँ तो हाइट बढ़ाओ, सेंटर पे। इसको इसकी हाइट बढ़ाओ, ठीक है। पावर बैंक से फोन लगा और चीज़ कर दी, इसका स्टैंड खुलेगा। हाँ भाई लैपटॉप चलो नहीं, मेरे को नहीं। भाई किसी की प्रेमिका नेट कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सही से होगा। हेलो 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 जी 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 क्या चार्जर निकालना अपना, क्या बोल चार्जर निकालना। हेलो चार्जर सफेद एक ही करो ना, वाइट वाला निकाल दो। वो नहीं वो कनेक्शन कैंसिल कर दो। आप 9 बजे लगना था, अब आप टाइम देखो। मैंने जियो का ये लगाना सुबह 9 बजे। कोई फेसबुक नहीं आया भाई, फेसबुक इंटरनेट का सही करो। अच्छा इसका मैनुअल काम नहीं कर रहा। तो फिर हाँ हो रहा। हाँ चार्ज हो रहा है। इसका फेसबुक का सुनो सुनो देखा था ना, वो इधर से फेस से नीचे कह रहे हैं, शेयर से यही कहीं होगा। नंबर ले लो मेरे नंबर से। तो क्या करेंगे नंबर है 8076041733। केशव नाम। क्या नाम है? केशव। भाई आउटपुट नहीं आ रहा है। आउटपुट होगा भाई क्या? आता है चेक करना एक बार डिलीट करके फिर से ऐड कर सकते हैं। कुछ भी कर लीजिए, मतलब यहाँ से कनेक्शन डन है, यहाँ का इशू नहीं है। ठीक है एक बार फिर से। और अपने को पोडियम चाहिए मास्टर फ्रेम में, ज़रूरी नहीं है, आप देख लो। मास्टर में नहीं लगाएंगे पोडियम। वो उससे ले लो पोडियम, अगर कुछ वैसा होगा ना जूम आउट कर देना। लेकिन कुछ खास अंदर माइक लगेंगे ना, बात करेंगे ना पैनल डिस्कशन में। हाथ वाली जाएगी, उसी का कनेक्शन मैं बोल रहा था यहाँ से ले लेने के लिए, उसके वन सोर्स से। ऑडियो के लिए हाँ ऑडियो तो आ रहा है, लगा तो हुआ है। ऑडियो मास्टर है वो, सबका है। सबका आ रहा है ना। हाँ तो मैं इसका फ्रेम का बस बात कर रहा हूँ। ये पॉज क्यों दिख रहा है? फ्रेम होल्ड है। बोलो भैया थोड़ा जल्दी करो भाई यार ये इसको हॉटस्पॉट दीजिए ना, फेसबुक लाइव नहीं हो पा रहा। सबसे उसी का लाइव अभी तो फ़ोन से सब कनेक्ट करके लाइव एंड कर रहा हूँ मैं, डिस्कार्ड मीडिया करता हूँ। हाँ मैं अभी कर दूँगा ना, क्योंकि दिखाने का मतलब नहीं है कुछ। यहाँ पे पता है फ्रेम पॉज है, फ्रेम होल्ड पे है, उसको फिक्स कराएंगे। यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं फ्रेम होल्ड पे है। फ्रेम होल्ड एक बार डिस्कनेक्ट करिए वहाँ से। ठीक है ठीक है, लाइट कम लाओ। ये पॉज क्यों दिखा रहा है?
side, yeah? Alright, a very good morning, ladies and gentlemen. We are about to begin. I request everyone, please maintain a bit of silence and kindly put your mobile phones on silent mode. Thank you. तुम्हें ऐसे नहीं लगता हमें उनका ऐसा लगना चाहिए रील फॉर्मेट में फोटो लेंगे रील फॉर्मेट में लाइव होते हैं सर ऐसे नहीं लगते लोग मान तो लोग ऐसे देखेंगे फिर मैं यहीं से ना करूँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई Once again, a very good morning, ladies and gentlemen. We are about to begin, and I request everyone, please maintain silence and kindly put your mobile phones on the silent mode. Thank you. घुमाने से इसको बोलो ये हमारा इसको ऐसे कर नहीं वैसे नहीं करो नहीं करना ही नहीं वैसा नहीं यार ये बंदा यहाँ पे तो हो ही ना तुम इसलिए इसको बस ऐसे अगर कुछ उधर होगा तो इधर हो रहा है तो इधर बस मूव कर देने का देखना एक बार देख लो एक बार स्क्रीन पे दिक्कत होगी ना बात समझो लोग फ़ोन ऐसे नहीं घुमाएंगे हमारी तरह नहीं है हमारी तरह घुमा के ऐसे बस मूव करते रहते हैं एक मिनट भाई एक मिनट सीधा करो ये हुआ कनेक्ट हो गया ना ये हाँ करेक्ट भाई अब देखना ये अब चालू हो जाएगा ना उसके बाद फेसबुक हो गया नेटवर्क इशू भाई आपका 5G फोन है इसको हॉटस्पॉट देके इसका नहीं आएगा एक बार हो गया ना किसी देर में आ रहा है लगा रहा है आधा घंटा मैक्स लगा दोबारा कर रही हूँ सब जगह स्टॉप करके मेरे को करना पड़ेगा मेरे वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए वॉल्यूम लेना मूव नहीं होगा इतना मॉडर्न के साथ अगर रखना है तो फिर ये रखना पड़ेगा और उसके लिए फिर ये है ना ऐसे इसको ऐसे ही रखना लेकिन कोई भी उठ के जाता है पोडियम तक हाँ तो थोड़ा सा मूव करके फिर पोडियम हमें दिखा ये दे। करना पड़ेगा ना अब आप बोलो वही कह रहा हूँ एटलीस्ट उठते हुए दिखा देना बाकी दूसरा कैम में पोडियम वाला कैप्चर मतलब ये इतना तो मूव होगा ही होगा ये जैसा ये वही है कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा ये मूव जाएगा। करना हो जैसे कोई उठ के पोडियम पे जाता है भाई अपना सेट है ना तो एक काम कर रहा है पड़ जाता है एक और चीज़ एक बार जैसे ही लाइव हो जाए यहाँ से या तो बैठ जाना या बाकी सबको हटा दो भाई सुनना मैं क्या हाँ ये क्या सर सर आप लोग जा रहे हैं 10 मिनट मैं आ रहा हूँ आप मेरे से मिल के ले जाओ जब सुनने की बात चल रही है वो फ्रेम सेंटर हटा दो सर हाँ हाँ यार ये सारे यहीं आएंगे नहीं ये लाइव कर हम लोग तो करेंगे हाँ कर लेना तो क्या सर आप 10 मिनट रुक जाते ना ये क्योंकि फेसबुक लाइव अच्छा हुआ उसी के चक्कर बाकी सब जो मैंने फ़ोन से कर दिया फेसबुक लाइव 10 मिनट में यही 10 मिनट करा दीजिए शुरू हो चुका है
सारा सेटअप हो गया, बस रखेगा दे दे। यार इसका क्या करें, किसी का फ़ोन है भाई, किसी के पास इंटरनेट है। भाई 5G फ़ोन है, सब कुछ है। हाँ भाई 5G फ़ोन है, 5G फ़ोन है। जियो 5G है, जियो नहीं, एयरटेल 5G है। हॉटस्पॉट है ना। भैया नेटवर्क सब हो गया था, फेसबुक हो गया। बस ही ना सब रेडी है, बस रखेगा दे दे। वो आने से हो जाएगा। हाँ मुझे अपना मोबाइल नंबर भेजो, मैं लड़के को सब भेजूँ, जगह तो लाइव लड़का वहाँ पर खड़ा है जो आएगा आपके आ रहे हैं, टाइमर चल रहा है। आ रहे हैं सब। जी बोलिए। वहाँ पे स्टेज पे आ रहे हैं सब, रेडी रखो। कौन सा कौन सा है? 7 शंकु से फोन करके आ रहा हूँ। कितना नहीं आया। क्या है 653 70 357। ठीक, इसके आपको रवि नाम से लड़का बोलेगा, रवि नाम के लड़के की कॉल आएगी। दो आउटपुट नहीं है, ये हमारा सेटअप चल रहा है पूरा, ये हमारा लाइन हाँ वो आपको जो गणेश कचौरी वाला है ना, गणेश चौधरी वहीं खड़ा हुआ मिलेगा आपको। बैक में कहाँ की है? एडिट हाँ जी, मान लो कुछ इधर उधर हो रहा है तो हाँ शकरपुर में वही है, गणेश चौक के साथ। हाँ हाँ वही गणेश कचौरी। हाँ कितने दिन लगेंगे? कहाँ पे घर है, मैं जाके मिल लेता हूँ। मैं को कॉल करूँगा। सर विशाल सर, विशाल सर, विशाल सर हो जाएगा, तुमको हो जाएगा। इसीलिए मैंने अरे यार ये मिस कर रहा है, दो दो मिनट वो आज लाइव ट्रांसफर कर दो। हेलो जी सर। हेलो बाकी सर कितना टाइम लगेगा? हाँ मैं अंदर ही हूँ। हाँ आ जा रहा हूँ। आ गई है टीम आ गई है? आने वाला। ऑफिस बंद में कितना टाइम लगेगा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आया। हाँ ना अंदर कैमरे के पास 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड कॉल आ रहा है। भैया हेलो भैया, रहने दीजिए, मना कर रहा है, कैंसिल ही कर दीजिए, रिफंड डाल नहीं रिफंड डाल दीजिए, मना कर दिया बीच इवेंट में ये सब।
silent mode. Thank you. Journey of collaboration growth as we all gathered here to witness the coming together of two visionary powerhouses to reshape the land of psychology, counseling and skill development. I welcome you all. So let me give a small brief about Counsel India's journey. Before we move ahead, let's gather some brief facts. Counsel India's journey began as a helping hand for people struggling with mental health, starting as an NGO. Our big dream was simple: help her counselor. And how? By training people who wish to become counselors and support others emotionally with an aim to build a global network of counselors and psychologists. Our vision was and is very clear: to offer top-notch psychology and counseling courses using affordable and easy-to-access technology. So without taking much time, I would like to introduce all our guests. We are honored to have amongst us our esteemed guest, Mr. Mani Tiwari, Chief Executive Officer and Manager, Director of NSDs. Can we give a huge round of applause? Thank you so much, sir, for joining us today. Then we have another eminent guest amongst us, Mr. Robin Hibu, IDS. Mr. Robin Hibu, IPS, a distinguished figure whose contributions to law enforcement and social service stand as an inspiration, with a career spanning various significant roles in the police force. Mr. Hibu's commendable journey includes pivotal positions such as Assistant Commissioner of Delhi Police, District Superintendent of Police in Arunachal Pradesh, and many more. So can we give him a huge round of applause? Thank you so much, sir, for joining us today. We are so pleased to have you here today. Now, I would like to address Shri Lal Masanda Sailo, honorary guest. Thank you so much, sir, for joining us. He is IRAS Officer, Government of Mizoram, Special Secretary and LESDE. So can we give him also a huge round of applause? Thank you so much, Shri Lal Masanda Sailo, sir, for joining us today. Then we have with us Mr. Bobby Thakur, the esteemed founder and executive chairman. So thank you so much, sir, for you as well joining us and gracing this beautiful day. We have with us Mr. Shivam Dixit, co-founder and CEO of Counsel India. Thank you, you as well, for joining us today. We have with us Mr. Devendra Kesari, the Chief Strategic Advisor. Thank you so much for addressing us today, sir. Thank you so much for gracing this event. Then we have with us honorary guest, Dr. Pramod Kumar Mehra, Professor from IGNOU, Delhi. Then we have with us DDS Chauhan, sir. Thank you so much for joining us today.
invitees as well. Mr. Sanjeev Kumar S., Vice President, Industrial Relations. Mrs. Jyoti Dimple, Vice President, Dean Academics. Mr. Sitaram Ajinalu Parami, General Manager, Skill Integration and Certification. Mr. Siddharth Sibil, Senior Manager, Skill Assessment and Certification. And all the employees and alumni, thank you so much for gracing this beautiful day. Today's gathering is not merely about the signing of the MOU. It symbolizes the coming together of minds, the collaboration between education and industry, and the commitment towards a brighter future for all our students. Counsel India and Medhavi University coming together signifies an impactful partnership rooted in the belief of nurturing talent, fostering innovation and empowering individuals to reach greater heights in their professional careers. So it's time for the lamp lighting. Shall we grace this beautiful day with the touch of God? Shall we? Can we do that? Allow a yes, please. Join us. He's going to be online with us. Then we have Mr. Robin Ibu, IPS sir. Please join us for the lamp lighting. Then we have with us honorary guest Dr. Pramod Kumar Mehra. And I would also like to invite Mr. Kuldeep Sharma, the co-founder and pro-chancellor. He is also one of our honorary guests. And also I request Mr. Bobby Thakur, please join us, sir, along with Mr. Shivam Dikshit, Mr. Devendra K. Saini. I request all our guests, please join us for the lamp lighting ceremony, and let's cherish this beautiful day and begin the show. Now I request our CII leadership
Mr. Shivam Dixit, Mr. Bobby Thakur, and Mr. Devendra Kesani, please address all our guests with a token of appreciation. We have a shawl and a brooch. Please proceed. We have with us our eminent guest, Mr. Robin Hibu, IPS, the Special Commissioner of Police, Delhi Armed Police. Now I request Mr. Devendra Kesani, please present our guests with the shawl and the brooch. Sir, can we have you here? And I request Mrs. Supreet Vahi, HR Business Partner, CI, please join us to present the shawl and the brooch to our guests. Now I request Mr. Shivam Dixit, sir, please join us to present the shawl and the brooch to our guests.
everyone, it's time for the inaugural address, and for that, I would like to invite Mr. Shivam Dixit, co-founder and CEO, Counsel India. It's an absolute pleasure to introduce our first speaker for today, a guiding force behind Counsel India, an accomplished fourth-generation entrepreneur with an extraordinary blend of skills and experiences. Sir, over to you. Hello. Feeling a little cold as well as butterflies in the stomach, but let us proceed. So namaskar, good afternoon and welcome ladies and gentlemen. It is indeed an honor to have you us today with our eminent guest, Honorable Shri Medhavi ji, CEO of NSDC and Managing Director of NSDC, International Government of India. Honorable Shri Robin ji, Special Commissioner of Police, Delhi Armed Police. Thank you so much, sir, for being here. And our guest of honor, Mr. Lal Ram Sangha Sailo, IRS Secretary, Labor and Employment, Skill Development and Entrepreneurship, Government of Mizoram, working hands in hand with NGOs, schools, colleges and universities. Along the way, we had forged strategic partnership with eminent universities and skill development bodies, both in India and abroad. Our endeavors have reached underprivileged communities, addressing their psychological counseling needs, mental health education, and providing essential skills to personal and professional growth. Our endeavoring motto is to empower every individual to achieve the highest emotional well-being possible. Furthering to our vision, commitment today is a historic day when we are entering in the groundbreaking partnership with Medhavi Skill University. MSU, a UGC and NCVT recognized Skill University, is poised to integrate skill-based education seamlessly into mainstream academic programs. MSU has empowered 50,000 plus individuals, with 60% being women, fostering transformative journeys that span across 20 plus states. In the august presence of leadership team of the university, I feel proud to announce this and congratulate both organizations on this occasion. Thank you. We are excited to embark on this transformative journey with MSU at the core of this partnership in a shared commitment to address the global mental health crisis. This unique partnership will bring convergence to higher education and skill development by creating skill training, embedded degree, diploma, certificate, and master programs. This initiative will create a great amount of employment and career opportunities to the youth. A great amount of credit in skilling the nation goes to apex bodies like NCVT, National Skill Development Corporation, and in transforming the youth and skilling them on a larger scale under the able leadership of Shri Medhavi ji. Aligned with the National Education Policy 2020 and the National Credit Framework, this collaboration emphasizes the importance of skill training as an integral part of mainstream education, playing a pivotal role in shaping the workplace need for 5 trillion economy. We understand the importance of education and skill development in driving economic growth, and we are proud players in this transformative journey. The presence of Commissioner Shri Hibuji is very significant today, policing in integral to community well-being, fostering safety forces for 30 years, and my younger brother is currently serving as Major in Indian Army. We find ourselves in historic times under the leadership of Honorable Shri Narendra Modi ji as we witness the unfolding of these transformative initiatives. Counsel India is committed to being an integral part of this revolution. Standing firm in the dedication to education, skill development, and mental awareness, I again express my sincere thanks to everyone present here today. With the collective efforts of MSU, NSDC, and NCVT, we look forward to a future where education is not just means to an end, but a catalyst for positive change. Together, let us forge a new era filled with possibilities. Wishing you great health and emotional well-being. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. As he mentioned that this collaboration is going to be groundbreaking and it's going to generate a lot of employment as well.
So I believe that this collaboration is going to be a grand success. Do you agree with me? Okay. So it's time for the MOU signing ceremony. Counsel India and MSU collaboration. I request the leadership from both, please proceed. Counsel India's impressive trajectory. Study hall. By 2017, the mission expanded to villages and schools, and soon after, to corporations and कि like lot of well wishers were there, advisors were there, और वो आज भी हमारे साथ है. तो उन्होंने हमें बोला कि यार अगर आप फ्री में दोगे ना तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी, और जो आपका विजन है कहीं ना कहीं उस विजन को भी अचीव करने के लिए यू नीड मनी. कोशिश करी स्टूडेंट्स तक रीच करने की, स्कूल्स में गए, कोचिंग सेंटर्स में गए, स्टूडेंट्स को अप्रोच किया, बट वी गॉट फेल्ड सक्सेसफुली. as challenges emerged, so did opportunities. Enter the Mind Power Training, MPT, a 21-day program designed to empower individuals, helping them build a belief system for internal growth. The success of MPT fueled their ambition. फिर से काउंसलिंग सेशंस स्टार्ट करे प्लस ट्रेनिंग स्टार्ट करी. By 2018, Counsel India extended its impact, reaching 8+ colleges, 15+ corporates, and beyond with the MPT product. हमारा ऑफिस उस टाइम पे मालवीय नगर था, और ऑफिस भी ऐसा था कि मतलब यू नॉट बिलीव, एक छोटा सा कमरा, उसमें 8 लोगों की सिटिंग थी, और उस 8 लोगों की सिटिंग में भी 2 कंपनीज काम करती थी. मतलब Marked our growth through 2019, while 2020 saw the launch of innovative psychology courses. Hi, my name is Devendra Kumar. What a journey, a fantastic roller coaster journey it has been for last, for more than 5 years by now. काउंसिल इंडिया के लिए कोविड एक वरदान की तरह साबित हुआ है. कोविड में हम कम्प्लीटली ऑनलाइन शिफ्ट हुए. हमने कंपनी के सारे प्रोसेसेस टेक्नोलॉजी पे हम ले गए. तो टेक्नोलॉजी के जो मेजर एंट्री है काउंसिल इंडिया में, वो कोविड के दौरान आई, और उसने हमें हमारी रीच को मल्टीफोल्ड टाइम बढ़ा दी. Well, the COVID-19 pandemic posed a challenge, but Counsel India saw it as an opportunity. Adapting to the virtual era, they saw their practical courses online, making education accessible to people across India and beyond. They didn't just teach psychology, they added entrepreneurship to the curriculum, a pioneering move in the field. Our reach extended globally, touching over 1 lakh listeners across 22 countries by 2022. We came up with an idea कि यार हम लोग ना MEPSC जो सेक्टर स्किल काउंसिल है, why we should not come up with something with government. In this period, we did a lot of A/B testings. We built the long-term roadmap and the company strategy. So back then when I joined Counsel India, I was just a single person in the team. But since then we have grown to 10 people in the team, and it has been a exceptional journey. We just started from scratch, like we will have 3 to 4 people. So now it's been expanded up.
have the next video, please? Okay, so as we have proceeded with the video presentation, let's move forward. It's time to immerse ourselves in a captivating cultural show brought to you by the talented members of the Counsel India Cultural Club, led by Ms. Shipra Sharma. Please join us and let me welcome them with a huge round of applause, everyone. They are going to present a beautiful music performance for us. Hello everyone. I hope you all are enjoying today's morning with our Counsel India family. And I want your attention for a few minutes so that we can enjoy more. So before starting, I want to ask you some questions. Like, क्या आप जिंदगी को खुलकर जी पा रहे हैं? Say yes or no. क्या आप घबराहटों को बाय कह पा रहे हैं? Say yes or no. आप खुलकर मुस्कुरा पा रहे हैं? Say yes or no. तो चलो आज सभी लोग हम क्यों ना जिंदगी को एक साथ मिलकर जीते हैं. So let's hands together and start. जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय हाय. जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय हाय. जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय. आने दो दिल में आ जाने दो. कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय. जाने दो दिल से चले जाने दो. कह दो घबराहट को. Come on, everyone! Let's sing together! Everyone! Love you जिंदगी. Love you जिंदगी. Love हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे. Everybody, come on together! Let's sing together! Come on! Everyone! आगे मैं तेरा चल दूं. मैं थोड़ी सी मुड़ी हूँ, तू थोड़ा सा टेढ़ी है तेरी मेरी. आने दो दिल में आ जाने दो. कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय. जाने दो दिल से चले जाने दो. कह दो घबराहट को बाय 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 बाय. Love you जिंदगी. Love you जिंदगी. Love you जिंदगी. Say love you जिंदगी. Love you जिंदगी. Love you जिंदगी. Thank you. What a beautiful start! Can we give them an even higher? Huge round of applause, everyone! Come on! And I request everyone, please be seated. We are about to start another session. We are honored to have amongst us our esteemed eminent guest, Mr. Vedmani Tiwari, Chief Executive Officer, brings a wealth of experience spanning diverse sectors such as education, transportation, renewable energy, and more. So they are going to join us online. A little update, he is not available right now, so let's carry forward this day. So now I would like to invite
Miss Shiva Counsel India, with 15 plus of experience in training and working with multiple industries, our upcoming speaker for the day has trained 25 plus people, including sales heads, senior managers, and managers over 7,000 teachers across Maharashtra. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Ms. Shipra Sharma, Senior Training Manager, Counsel India. Hello everyone. How's the job, ladies and gentlemen, our honorable guests, and our respected leadership. Welcome to this remarkable occasion marking the signing ceremony of a significant memorandum of understanding between Counsel India and Medhavi Skills University. Today, we stand to witness a transformative collaboration that promises to redefine the landscape of psychology education in India. What Counsel India is? Counsel India is a vanguard of practical psychology learning and counseling, establishing itself as a leader by delivering transformative education and counseling experiences. It has garnered a community of over 350 plus employees across 3 locations, 150,000 plus learners across 22 plus countries, and an impressive social media reach of 25 million plus. Isn't that great? Counsel India's impressive trajectory in advancing practical psychology education, coupled with MSU's commitment to quality skills education, lays the foundation for a partnership that is truly unique. Here are some dynamics of this unique partnership. Counsel India and Medhavi Skills University are pioneering a convergence of higher education and skill development, envisaging skill training, embedded degrees, diplomas, certificate, and master programs. Today, this collaboration stands out as a beacon of innovation, aligning with the National Education Policy 2020 and the National Credit Framework. This partnership is all about nurturing talent, fostering innovation, and empowering psychology aspirants. This partnership is creating better employment and career opportunities too.
and NSCC would like to engage with both of you on this matter. Take counseling to that extent where we can do some diagnostic assessment of every individual that comes to us and should be able to determine a career path and be hand holding for that person. So from this perspective, I congratulate you for this program and wish success in going forward. And NSDC is there. This is although the MOU is being signed between only Medhavi University and the Council India, but I would like to tell you that we are here and we would definitely like to do another program where NSDC also joins this initiative. So with these words, I would like to stop my conversation. Thank you. Thank you so much, sir, for gracing us with the information we have received from you. And as you mentioned that we need an army of counselors, of course we need an army of counselors so that this place, India, can become a more peaceful area. Is it right? Do we want peace in everybody's mind? As we all know that mental illness and mental depression and all is exceeding much. And for that we need a lot of counselors to ease them. Am I right? Say yes if I'm right. Okay, so let's move forward. Now I would like to invite Professor Pramod Kumar Mehra. He is also one of our guest of honors for the day. He is a distinguished academic at the Indira Gandhi National Open University in New English Literature and Teaching Methodologies. Recognized for his dedication, he is been honored as an ambassador for peace by the Universal Peace Federation and nominated as the President of Youth Federation of World Peace, India Chapter. With this, sir, can we have you on the dais, please? All right, thank you very much. I treat it this as a real privilege to be able to connect to you on this important, historic day, and with such nice people, with such profound thought leaders on the dais, Robin Ibuji, the thought leaders from Medhavi University, Bobby Thakur and Shivamji, Dr. Dipender and our friends, and all of you of the dais, and this is an important thing in the making. And I think that every time when we come to a concept, we discuss a concept, the context is also important. You see, if we see around, our NSDC chairman talked about this, that we have just celebrated the 75th year, and we are strategizing how we will chart our way for the 100 years of Indian independence. How shall we discard the colonial mindset, and how shall we look at ourselves in a brighter light? When we are talking about the context, it's also important to see how UN looks at us. United Nations. I was reading the statistics as to how they see India as a youth capital. Youth capital in the sense that how about 65% and even more, of us belong to that, 25 years or less than, in terms of age bracket. So like they are saying, if you read global statistics, that if India is not growing, if Indian youth is not contributing to this, perhaps this world does not move at large. At a macro level, this is a responsibility. Also, if I may add to this context, that India is being looked at more like as a market, as a middle class territory, as a landscape where big MNCs can come and make profits. But I think that looking at our civilizational evolution, civilizational contribution to the making of this world, it is high time that
we identify ourselves, we kind of situate ourselves as a knowledge economy. And today's this important thing, our mind has to be in place, our psychology, our that sense of, we always say that, right from days of Buddha, we have talked about, mind and psychology, so this is our domain. So when I'm reading about this important thing, I'm more and more convinced that Counsel India with this, very important, like the way they have proved themselves. Every time I connect with them, I find that newer and newer layers of commitment, dedication, excellence, is there. And I have connected to the alumni also. Like I was there, I was there in the graduation ceremony, and I could, relate to the testimonies and the value addition and the personality transformation. So this is not only at the individual level. This is not benefiting you at the individual level. This goes much beyond. Tiwari Sahab was saying that this is, in that sense, in the direction of nation building, Rashtra Nirman, Rashtra Sarvopari that we are saying. So yes, when I am here, in my deepest of heart and mind, I'm convinced that this is a step in the right direction. This is kind of is in perfect alignment as to how we will, as a society, as a nation, will contribute to not just as a material entity, not in the sense that everyone is talking about in gross domestic product, that GDP thing, but as a knowledge thing. We stand for, in this country, stand for knowledge, and when I'm talking about knowledge, it's not just information. It's not just like what we accumulate in terms of data, It's not in that sense of big data thing. I'm saying it's about wisdom. It's about living for the sake of others. It's about kind of sacrificing and kind of annihilating ourselves for the making of a better nation. If we chart ourselves, if we kind of move in this direction, I think all important major critical challenges, because of the colonial, problems and a huge backlog, we are still facing many challenges. But with this training around, with the important courses that we have on our sleeves, I think we are all set to kind of resolve those. And I think that day is not far when we will call these major critical issues, challenges, poverty and kind of issues of all kinds, caste, class, gender, race in this country, that will be part of history. And as this idea of counseling and the stronger and profound psychology, I think we are there in that sense. And may I also kind of commit myself at my individual level and the institution that I belong to, the world's largest open university, that we will be there to kind of strengthen your race in all possible, senses and in all possible ways. Thank you very much for giving me this opportunity to connect with you and to, kind of, smoothen ways for this important initiative. Thank you very much. Thank you so much, sir. And I really like the statement he made that our mind has to be in place. Of course, that's the utmost priority of every human being, that our mind is in its place and peaceful. So before we go ahead, I would like to extend my gratitude on behalf of everyone present here. Thank you so much once again, Mr. Robin Hebel, sir, for joining us. He embodies the essence of excellence and represents the pride of our nation. So for that, he has given us his esteemed time. Can we give everyone? Come on, everyone. Can we have a huge round of applause? Thank you so much, sir, once again from the entire group. Thank you. So let's move forward. Now I would like to invite Dr. Dipender Singh Chauhan. He is our guest of honor. It's an honor to invite our esteemed guest of honor, Dr. Dipender Singh Chauhan from the Department of Education, Haryana, to grace the stage and share his invaluable insights with us.
So sir, can we have you on stage? Everybody wants your valuable insights. Please join us. A very good afternoon to all of you. I will open with an African proverb, which quotes like this: if you want to go fast, go alone. And if you want to go far, go together. On these positive lines, on this historic occasion, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to express my deep appreciation for all dignitaries present here, especially Mani sir, who was present online, Hibu sir, of course, a cop with a golden heart. Huge round of applause. You might not be aware, a book, a biography has been written on his life. It was released recently and it was appreciated very well on this occasion of signing of MOU. The partners, Medhavi Skill University, all the representatives from Medhavi Skill University, when I was just reading the program, as we call, when we talk about Counsel India, there is a punchline, counseling simplified, right? You say it this way, same way Medhavi University says, skill, empower and liberate. So when you are skilled, you are empowered. And when you are skilled and empowered, of course you are liberated. So you guys are doing amazing job, sir. Thank you so much. And then Bobby and Shivam Thakur, Bobby Thakur and Shivam Dikshit, and of course Devendra Saini. These, the trio I call them, they are making headlines nowadays. And as the way they are making efforts, we have miles to go. The sky is the limit. Now these two partners will work together, especially the Medhavi Skill University and Counsel India, more closely towards common goals, and of course in making our youth self-reliant and skilled in order to face the future challenges. As they say, when Manisha was talking about, this is called accelerated transformation. Over the years, we see a lot of changes happening in an unprecedented way. Mobile telephony has changed, fast internet connectivity, then cloud space, then big data, etc., etc. So we also need to work in tandem with the changing scenario. So we have to take care of it. There is no gap which is existing right now. The need of the society, the skill which the industry needs, the skills that the departments needs, we need to cater to those needs. So that's very important at this stage. So they would pursue significant activities in exchange. I express my sincere gratitude to everyone whose dedication and efforts have contributed to the finalization of this MOU. I'm referring to all, especially the representatives of Medhavi Skill University, the founders of Counsel India, advisor of Counsel India, all competent team members of Counsel India. Your insights, goodwill, and collaborative efforts, cooperation, and a will to work together has made this signing authority a reality. So round of applause for all of them. I do believe that all stakeholders will work in tandem and make endeavors in order to provide a successful implementation of this MOU. Through your efforts and commitment, you will be able to achieve more and develop stronger relationships. It's a productive collaboration of knowledge, exchange, capacity building, and skill upgradation. I believe you will all continue to maximize your respective strengths and complement each other's strategic work. This partnership in particular is relevant today in post-COVID challenging times of health and socio-economic crisis. We all are eagerly looking forward
to see the fruits of this collaboration between two leading partners for a healthier, productive, skilled, and smarter workforce in future. It is a great honor for me to be here as usual. Thank you, Bobby Thakur and Shivam Dixit, for inviting me to this program. But before I leave, I would definitely share some important attributes of Robin Hibu sir. Robin Hibu sir comes from Arunachal Pradesh. He is the first IPS officer from Arunachal Pradesh who has made headlines. And he's, as I was going through the profile, he's a truly a Gandhian cop. Not just in deeds and in words also. So another biography is also on cards, sir, right? And to be more precise, he is working with a helping hand, one NGO he has formed, where he is helping people from northeast in distress, and especially underprivileged children and people who just want to make a niche for themselves in their respective careers. So thank you, sir, for doing a wonderful job. And more than that, when I was just discussing the things with my friend, they said that sir believes that if you can make a difference in somebody's life, if you can make some difference in somebody's life, your life is worthwhile. This is the kind of he believes in, and I read that in a Hindu newspaper, an interview you gave, sir. So thank you so much for gracing this occasion. It is indeed a pleasure for all of us here, especially all the members of Counsel India. And thank you so much for giving me this opportunity to be present here as a special guest. Thank you all the members, Bobby, Shivam, Devender, and Counsel India rocks. Thank you so much. Yes, of course, Counsel India rocks. And with this, can we give him a huge round of applause? He has expressed so much emotions, information, everything with us today. So now, it's time for experience sharing and activity by Counsel India alumni, and we have two beautiful people who are going to share their experience. So can I invite Lakshmi? She's an ongoing learner. Can we have you here, darling, on the dais so we can hear your experience? Do come by. And we have with us Piyu also. Good afternoon, everybody. Good afternoon, everybody. I'm very proud to be an ongoing student of Counsel India. I'm presently pursuing Masters in Psychology, and I wanted to upgrade my skills. So as I was going through social media channels, I found Counsel India's course to be much better than similar organizations. And I'm very proud today as we have got a partnership also with Medhavi Skills University. So I really hope that I have a bright future. Thank you. Thank you for sharing with us your experience. If Piyu is around, can we have you here? Piyu has completed the course, and we would love to hear your experience. Hello everyone. Myself Pihu, and right now I'm studying in class 11th, as well as I have completed Child Psychology Diploma course with Counsel India, and I am very happy to say that Counsel India helps me with knowing about world and mental health, and I love to being with Counsel India in my future as well. And I am very happy that Counsel India invites me to this beautiful event. Thank you everyone, and have a beautiful day.
Thank you so much for sharing your experience. Now let's carry forward. So next I would like to invite our guest of honor and our keynote speaker, addressed by Kuldeep Sharma. Mr. Kuldeep Sharma is a visionary leader serving as a co-founder and the pro-chancellor of Medhavi Skills University. His impactful role extends as the director of the Medhavi Foundation, the driving force behind the university's evolution. Since 2012, Mr. Sharma has been the helm of the foundation's remarkable expansion, spreading its influence across 18 states in India. With this, can we give him a huge round of applause? And sir, can we grace the beautiful dais with your presence? Respected Special Commissioner of Delhi Police, Robin Ibu sir, respected CEO National Skill Development Corporation, Medhavi sir, respected Secretary Labor Employment and Skill Department, Laganam Sangha Saidu sir, other distinguished guests, and a vibrant team of Counsel India and my team also. First of all, I want to congratulate everyone because today, whoever is present here, will be part of that historic day which we will celebrate. When I say historic, I have a deep logic and meaning behind that. In our path towards generating employment, creating entrepreneurs, making Bharat Vishwaguru, that was our ultimate vision from the very beginning. When we started Medhavi, Prabheshji, myself and our team, we had a very single vision. Everybody is talking about unemployment, but nobody is talking about generating employment, jobs, entrepreneurship. So that was our vision from the beginning. And due to that only, we got recognition from the government, from everyone of this country. And second part of that vision was, everybody is focusing on the 2% population of this country, that elite class, who can pay a fee of 1 crore, 2 crores, 50 lakhs, whatever. But nobody, as an education institution, was focusing on the marginalized people who don't have that much financial backup to go for higher education. When I say higher education, like engineering, like our MBA degrees, like other technical programs. Thanks to NEP 2020 and National Credit Framework, that became possible as whoever was having experience in their particular sector, who was working in their particular sector from last 15-20 years, under National Credit Framework, now it's possible through recognition of prior learning, through assessment, as a skill university, we can recognize their experience, we can give them degrees. Parallelly, bring the brand ambassador of apprenticeship. Medhavi is engaging candidates as apprentices in the industries, as trainee. They are getting their theory practical classes in the industry premises itself. In the way they are getting their practical training as well as theory classes, and they are getting their degrees. So that model we applied in every sector. When we started this model, we needed giants in their particular sector. So the next, we decided that we will tie up with the giant sectors like Aditya Birla Group, Reliance Retail, like
IHG group, this holiday in this hotel. This is also industry for us. We have our students here. They are doing their hotel management programs along with the practical training. Crown Plaza, this nearby hotel. So we tied up with JW Marriott Group, IHG Group, ITC, then Redison, like that. In hospitality, in healthcare, we tied up with Apollo, other critical care hospital, this kind of giants in their sector. So, like Acres in aerospace manufacturing. But I have to appreciate the leadership of Counsel India, that till now we haven't got that kind of giant players in guidance, counseling, and psychology, who are working very seriously and in this in a structured way in this sector. And I really appreciate their efforts. That this is needed for national building actually. This is not just a small institution or a big institution. It's not about the institution. It's about the national building contribution which they are doing as Medhavi is doing from last so many years. So, one big clap for the Counsel India team. In this journey of Medhavi from last 11 years, I got many mentors. I'm thankful to them that due to their guidance, their time-to-time support, they pointed out everywhere wherever I made any fault, I made any mistake. Medhavi made any mistake. So, especially I am thankful to Robin Hebu sir. Thank you, sir, for your guidance every time. And one thing is very special about sir, that he knows whom to appreciate, whom to punish. So whenever I did any mistake, he straightforward says, Kuldeep, this is wrong, you should improve on that. And whenever we did anything good, he appreciated that publicly. And that for that I am always thankful to you, sir. I am also thankful to Bedmani Tiwari, sir, for his support. And when I say NSDC, CEO NSDC Bedmani Tiwari, sir, I should say that we are the anchor university of National Skill Development Corporation. When I say anchor university, we are the only university in India who signed with NSDC last year, through which all the NSDC affiliated skill centers across India, there are more than 5,000 centers, there we can run our BWOC programs. And being the innovation partner of NSDC, when we are tying up with Counsel India, I am counting them as a giant in their sector, as is our strategy for other sectors. Because whatever this organization is doing, as per my assessment and my study, they are doing exceptional work in their sector. So, how this collaboration will work, just allow me to just cover that point. See, there are many people, many institutions working at a small level in psychology, counseling, and guidance. There is no point of discussing that what is the requirement of counseling and guidance and psychological things. Everyone knows. But there are no serious players in this sector, and which is a prime necessity in this country. If the country needs to be at the top of the world to become Vishwaguru, the leader of the world. So this was also a necessity. So already Counsel India is doing good in their sector. They have many programs, diploma certificate programs, which as an awarding body, being the NCBT recognized awarding body, first will
approve in our board the program, then it will go to NCVT, will take their approval in the certificate programs. And maximum people know about National Credit Framework and NP 2020 provisions. So through NCRF and recognition of prior learning, the people who are already doing counseling job or as a guide in the industry, like labor, they are in labor psychology, somebody is in entrepreneurship psychology, that kind of things. So we will recognize their experience, their expertise in their field through assessments. We have already designed degree programs for them, specific programs in this sector. So in that way, we will, and as a awarding body, we will issue the certificates that credits can be added if they want to go to the degree programs, even to MBAs and other programs. So in that way it will work. So nothing much to say. Congratulations everyone, and when to visionary organizations who want to excel for this country, not for the institution, but for this country, for the world. So when they are coming together, I have a strong belief that our vision, now I am not saying my vision, it's our vision. When I say ours, means Medhavi and to make Bharat Vishwaguru will come true. How many people agree with me? Just raise hand. Thank you so much. It means we will become Vishwaguru. We means we the Indians, the Bharat. Thank you so much. Thank you so much, sir, for expressing those information and emotions we have witnessed today. So now, for collaboration strategy and roadmap presentation, I would like to invite Mr. Devendra K. Saini. He is a seasoned entrepreneur and founder of multiple ventures. His lifelong passion for learning and diverse expertise in strategy, expansion, planning and execution have been instrumental in guiding Counsel India to new heights. Devendra's journey of success and failures has made him a relentless learner, always striving for excellence. So it's an honor to have him here with a huge round of applause, everyone. Sir, can we have you on the podium, please? Sir, please join us. Thank you. Namaste, good afternoon. Esteemed guests, dignitaries, colleagues, friends, ladies and gentlemen. It is my great pleasure and honor to speak before you today. As we gather here at this exclusive partnership event between Medhavi Skills University and Counsel India called Pragati 2024, we embark on a journey that promises to redefine education and skill development. The virtual presence of our eminent guest, Shri Vedmani Tiwari ji, CEO of NSTC and Managing Director of NSTC International, and a very, very special presence of our eminent guest, Honorable Shri Robin Hebuji, IPS, Special Commissioner of Police, Delhi Police, adds tremendous value to this event. Shri Hebuji is also Additional Director General of Police and is a former Chief Security Officer of Rashtrapati Bhavan and a recipient of numerous awards, including President's Police Medal and so many achievements. We are so privileged to have you with us today, sir. And your presence signifies the significance of the collaboration we are celebrating today. I also extend my thanks to Sri L.S. Sailoji. Due to some reasons, couldn't join, but he couldn't address us, but he
gave us his kind consent to us to be part of this ceremony. So thank you so much for extending your support. I'm sure that the words of wisdom and inspiration shared by the speakers before me, with Maniji, Kuldeep ji, Shivam, Pramod ji and Chauhan sir, has greatly impacted us. Kuldeep ji is the one I would extend my heartiest thanks to. Kuldeep ji, who is the person who has put all of this together, who has been so kind to bring Robin sir between us today, Ved sir between us today, Silo sir between us today. So a huge round of applause for Kuldeep sir, please. Pravesh sir, the Honorable Founder and Chancellor of the University, couldn't join us due to some health reason, but he is the inspiration that this pioneer university has come together and has we are ready to embark on a journey together to create the impact which just our Honorable then President Ramnath Kovind said that India was potentially facing a mental health epidemic, with 14% of the population experiencing mental health issues at that point of time. Now think about in 2024. This pandemic has fueled this crisis even further, especially the young population significantly. India took an initiative, the government took an initiatives. We come up with an act called India's Mental Health Healthcare Act, but it couldn't work well so far because only a few states incorporated it into their budgets. You'll be surprised to know that the developed countries allocate 5 to 18% of their annual healthcare budget to mental health. But do you know how much we allocate in India? It's 0.05%. The World Health Organization estimated that India's economic loss due to mental health disorder is whoppingly 1.0 trillion US dollars. So 1 trillion हम पहले ही कर लेते अगर mental wellness थोड़ा better होता country में. 5 trillion economy पे पहुंचने के लिए 2 साल कम लगते हैं. Having a mental health disorder at this level with a sense of judgment in India it makes it even worse. We are being judged if we come forward with these things. So having understood all of these problems, if you look at the situation in the quantum, how huge it is, there is a tremendous need to fix these things, find solutions to it. According to various public reports, India needs about 50 lakh counselors for counseling of the school students only. And if you look at the other aspects, it is more than 50 lakh counselors is a minimum need. We have just one psychologist and 3 counselors per 1 lakh population. So you can imagine the deficiency. The number of counselors and mental health experts are very, very limited, and we're unable to provide access to all. There are sizable players in the marketing operating into different or something different they're doing. But as rightly said by Kuldeep sir, that they are not operating at the scale and size and in the space which is the most required. So, ladies and gentlemen, I would say that the Counsel India is uniquely placed in this landscape. We are committed to make mental and emotional well-being affordable and accessible at a rapid scale, addressing the shortage of counselors and mental health experts. Our approach stands out in the country, aiming to create a positive impact on a large scale. So the strategy for us is very simple and straight. At Counsel India, we do 2 things in most simplest and unique way. हम 2 काम करते हैं. We train and upscale counselors. That is number 1. Number 2 is when these trained counselors, they go and provide one-on-one counseling sessions to masses, to individuals, to navigate various challenges and promote mental and emotional well-being. And also, interestingly, the scaling is also twofold. If you want to become a counselor, welcome to Counsel India. But if you want to become a better parent, or a better teacher, or you want to be a great at relationships, to do better in your professional career, we are the place for you. We have all
the solutions which inclines or makes you better with emotional well-being of people like us all across. Simple but very powerful, isn't it? Yeah. From now on, after this Counsel India and Medhavi Skills University partnership, skilling and education is going to the next level. We are very proud to enter into this partnership. Being the front leader of our respective fields, we come together to form a new beginning to strengthen the human minds and unlock the national potential. Sanjeev ji, who is sitting here from the leadership team of MSU, is the pivotal point from where we took this point discussion, and thanks to him that we got connected and this flourished to this level today, that the impact is going to be at a mass scale. As we get into this partnership, it's important to highlight its uniqueness, my friends. From programs we are going to create to the specializations, from methodologies to the institutions, this collaboration stands as a beacon of innovation. Medhavi Skills University, with a giant presence in the country, with the kind of impact they have created already, partnering with Counsel India, who is a leading player in the segment, signifies a convergence of modern skill development against the backdrop of a traditional university setting. Skills University is very different from a traditional skills traditional university in the sense that the programs we create are the industry demanding programs which the industry demands, which are very contemporary, and the kind of skills you need instantly you can create programs around it. So that's how it aligns with our goals and the kind of work we are doing. We are perfectly aligned with the visionary National Education Policy 2020 and the National Credit Framework. This recognition underscores that the skill training is not an alternative, but an essential and complementary part of mainstream education now. The key objectives and the roadmap ahead of these partnerships are to skill, reskill, and upskill 20,000 plus people in the next 1 year, making them counselors, better parents, teachers, professionals, and better human beings. To create robust employment and career opportunities, ensuring learners not only excel academically, but also gain hands-on experience through a specialized feature of these programs called OJT, On-Job Trainings. OJT, you all must be familiar, right? Especially from the family of Counsel. To co-create and unique and industry-demanding programs for mainstream careers in counseling and psychology to address mental health challenges worldwide and to play a crucial role in shaping the workforce needed for a 5 trillion economy, one of the key goals of our Prime Minister. I invite all the key stakeholders, my humble invitation to NSTC and CVET, even to Delhi Police, sir, the central and state governments working together with Counsel India to create impact from small to large at national level. As our Prime Minister, Shri Modi ji, is making us proud on the world stage to witness the unfolding of these transformative initiatives. Counsel India is committed to bring an integral part of this revolution. Make in India, impact globally. My special thanks again to our esteemed guests in the MSU leadership again. Thank you very much. In the end, I would quote a famous saying of my favorite, Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. My understanding of stay hungry and stay foolish is that we should never stop learning and we should always try new things. We should be courageous and never be afraid to go extra miles. We must have a want. We can always build something better, and here we are. Thank you once again. Let us together forge a path towards the transformative impact and boundless boundaries. Thank you. Enjoy your day. Thank you so much, sir, for the address you have given us, a roadmap, and a lot of discussion we had today. So before we move ahead, I would once again, from the entire group, thanks so much, Mr. Robin Hibu, sir. Thank you once again. He has given us his esteemed time. You can see since morning he's been with us, and
these people, these eminent personalities always have a tab on time, that their time is so precious, but still he has managed to give us so much of his precious time to us. On this note, can we give him a huge round of applause? Thank you so much, sir. And everyone, it's time to have the eminent personality on the dais with us. So can we welcome once again Mr. Robin Hebu, pioneering IPS officer, Special Commissioner of Delhi Police, on the dais with a huge round of applause. सबको मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत बच्चे लोग लगता है बोरिंग हो, थोड़ा सा एक चुटकुला सुनाता हूँ आपको, लेकिन ये इसी दरवाजा के अंदर में होना चाहिए। हाँ, एक नेता हुआ करता, वो हमेशा महीना में एक बार या 2 बार अपना बाल काटते थे नाई को बुला के। तो वो नाई भी बहुत चालू था, बोलता है कि सर आपका इस बार इलेक्शन होगा, आप मंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका क्या होगा, आपका पार्टी का क्या हो रहा है। तो 1-2 बार चलो होगा, अच्छा होगा, ये होगा। 2 बार 3 बार 4 महीना हो गया। एक बार नेता को बहुत गुस्सा हो गया, तू मुझे हर समय में क्यों पूछता है कि इस बार आप मंत्री बनेगा, क्या रिसफल होगा, क्या आपका भविष्य क्या है। तो नाई बोलते सर जब इलेक्शन के बारे में बात करता आपका बाल खड़े हो जाता, मुझे काटने में आसान हो जाता। सबसे पहले मैं आज आप लोग ये जरूर सोचते होंगे कि ये पुलिस वाला यहाँ क्यों आया है। जनरली हम फौज में यूनिफॉर्म में रहने वाला जनरली आप देखते होंगे, आपका जिंदगी में आज तक देखा होगा, जनरली हम अपना दुनिया में वो लॉ एंड ऑर्डर, फौजी, बॉर्डर, ये वो कोर्ट कचहरे उसमें होते रहते। लेकिन हम थोड़ा सा अलग है कि मैं मानता हूं कि इंसान जो है चाहे वर्दी पहने, लेकिन आखिर इंसान तो है ना। दुख दर्द जितना होता है वो भी समझता है। और मेरा नसीब अच्छा था कि मैं जिंदगी की शुरुआत, कुछ लोग जानते होंगे कि मैं अरुणाचल से आते हैं, चाइना बॉर्डर का रहने वाला हूं। हम तो नसीब नहीं थे आप जैसे यहाँ दिल्ली, बैंगलोर, गुड़गांव, नोएडा। हमारा जहां हमने अपना एजुकेशन शुरू किया तो उसमें ना पानी ना बिजली। एक महात्मा गांधी का एक छोटा सा आश्रम था, उसमें जब 1945 में बापू ने जब गुवाहाटी में आया, उन्होंने सब असम के युवाओं को कहा कि भारत क्विट इंडिया मूवमेंट में ज्वाइन करो। और आप इसमें उन्होंने आश्रम खोला गुवाहाटी में, कहा कि इसमें ट्रेनिंग ले लो, ट्रेनिंग लेने के बाद आप नागा पहाड़ में जाइए, अरुणाचल में जाइए, और उन्हें हम पहाड़ी को भी बताओ आजादी के संग्राम क्या है, उन्हें भी प्रोत्साहित करो कि भारत के आजादी संग्राम में वो भी पार्टिसिपेट करें। और उसके साथ ही साथ एजुकेशन सिखाओ, भारत के बारे में जो बेसिक एजुकेशन वो सिखाओ। तो उसी में मेरा गांव होम विलेज है, सेकेंड लार्जेस्ट विलेज एशिया में है। उसमें एक असम से एक औरत, एक जवान लड़की, इनफैक्ट गुरुबाई बोल का अपना जिंदगी सब कुछ कुर्बान कर बापू का कहने पे वो अपना ट्रेनिंग लेके गुवाहाटी में वहीं पहुंची। और मेरे गांव के बाहर 7 किलोमीटर दूर उसमें एक आश्रम खुली, महात्मा गांधी सेवा आश्रम। उसमें हम लोग जिंदगी में बिना पानी, बिना बिजली, बिना रास्ता, रघुपति राघव राजा राम गा के जिंदगी में आज क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ा है। ये खासियत को इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि देखो एक ही एक औरत गांधीवादी, एक ही थी उनका। हमारे इंग्लिश टीचर भी हो, मैथ्स भी हो, फिजिक्स भी हो, साइंस भी हो, फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी हो। तो आज लगता है यार मैंने भगवान को सुनने में तो आया है, संत जो होता है ना उनको पढ़ता तो है, लेकिन हम अपना आंख से देखा जिन्होंने अपना जवानी कुर्बान कर दिया, शादी नहीं किया, और सब कुछ उस गांव के लिए उन्होंने सब कुछ दे दिया। और उसी का जो बापू के चरणों में हम लोग उसी आज भी जब रघुपति राघव राजा राम गाना गाते रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
जब भी जब दुख होता है बापू का राजघाट में जाते हैं, सुनते थे। तो वैसा करके हम जिंदगी में आया। तो मैंने सोचा मुझे विदेश सर्विस मिला, स्टेट सिविल सर्विस में 1 नंबर में नंबर 1 रैंक का था, एसडीएम बना, 1 साल काम किया। लेकिन जब मैंने देखा कि यार मैं एसडीएम से मेरे कहां तक पहुंचने वाला है, आईएएस तो बन जाएगा लेकिन वो 15 साल के बाद, फिर यार उतना तक तो पता नहीं कितना जोश होगा कि नहीं होगा। तो फिर के यूपीएससी में मुझे फॉरेन सर्विस मिला। सोचा बहुत अच्छा, दुनिया घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आखिर वो गांधी वाले वाला जो संस्कार जो है वो खींच लिया। बेटा तो तेरा गांव में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सारा सब लोग इस तरह जिंदगी गुजर रहा है, क्या उनको छोड़ के तुम अमेरिका में उसकी पीने जाएगा? नहीं, मतलब वो मेरे अंतरात्मा की आवाज है। तब मैंने अपना एसडीएम को भी रिजाइन किया, फॉरेन सर्विस एक्सेप्ट नहीं किया, पुलिस सर्विस में, क्योंकि मैं आधी क्लास के बाद उसी हमारे एक जिला जो सरकारी स्कूल में मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, बहुत ही अच्छा लगा, वर्दी मिला। आज भी मुझे वर्दी बहुत पसंद है। तब मैं आईपीएस अरुणाचल का फर्स्ट आईपीएस बना, मैं पुलिस में ज्वाइन किया। क्योंकि अगर मैं विदेश में होता तो आज शायद मैं आपके यहाँ नहीं होता। और मेरा शायद वो फैसला बहुत सही था कि आज से मैं जितना मैं 7 जिला में एसएसपी रहा, कप्तान रहा, यूएन में भी मैंने नौकरी किया, इंडिया को पुलिस कमांडर बन के कोफी अन्नान के अंदर में काम किया। बहुत गौरव मेरे को ये वर्दी जो पहनते तो लगता है कि देश सेवा की भावना, अब लोगों के लिए कुछ करने की भावना, अपना समाज के लिए कुछ वापस दे दो, वो आग, इस चिंगारी मेरे दिल में है। मैं नहीं बोलता हूं, मैं सबको, मैं जो आईएएस आईपीएस को भी मुझे बुलाता हूं, उनको भी मैं संस्कार देता हूं, पढ़ाता हूं, जुडिशियल एकेडमी में भी, मसूरी में, हैदराबाद में, मिरांडा में, सेंट स्टीफन कॉलेज में जाता हूं। मैं सबको बोलता हूं, जिंदगी में देश ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम उसे भूलना नहीं। चाहे तुम आईआईटी बन के अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, कहीं भी जाओ, और ये बिल्कुल दुख की बात है कि आप जब आजादी के बाद हमें बापू ने, शास्त्री ने, भगत सिंह ने हमें आजादी तो दे दिया है, लेकिन उन्हें संभालना हम सबका काम है। वो तो सारा कुर्बान करके, आज भी आप लोग सोचते होंगे ये पहाड़ी वाला काम कुर्बान किया, नहीं, हमने भी कुर्बानी किया है। हमारा उससे भी, मेरे गांव से मातमूर जामो, जो कैप्टन ग्रेगोरसन ने अंग्रेजी ध्वज फहराने आया, उन्हें हटाया, लड़ा, आजादी के संग्राम में पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने भी, उनको भी काला पानी में भेजा। ऐसा बहुत कहानी है, हमने भी साथ दिया है। ये मत सोचते हैं सिर्फ भगत सिंह, गांधी, नेहरू सिर्फ दिया है, हमने भी वो पहाड़ में भी, हमने भी संग्राम में, आजादी में लड़ा है। और इसीलिए मैं सबको मैं कहता हूं कि हम एनसीईआरटी वालों को एजुकेशन वाला देते हैं, सीबीएसई को भी, क्योंकि जब मैं एमएचसी का कमिटी में मेंबर हूं, पीएमओ में भी राष्ट्रपति जी के साथ में रहा हूं, कोविंद सर ने बताया, मैं तो उनकी साथी में नौकरी किया हूं। हर रोज बोलता हूं, भूलना नहीं है यार, हिंदुस्तान एक बगीचा की तरह, हम हमेशा ये कहता हूं। पगड़ी पहनने वाला बोले सोनिया सत श्री अकाल पंजाब से, लुंगी पहनने वाला वनकम तमिलनाडु से, बड़े मुस्ताज पहन के लगे ताऊ हरियाणा से। तो हम सब इस बगीचा को हम सबका संभालना है, खासतौर से नौजवान जो युवा बेटे हैं या स्टूडेंट साहिबान, जाना है तुम्हें, दिया है मेरा पुरखों ने हमारे इस देश को, तुम्हें संभालना है, हमें संभालना है। ये मेरा बैकग्राउंड है। और मैं इसीलिए मैं कहा कि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, मैं राष्ट्रपति जी को भी बोला है, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट करता है, होम मिनिस्टर भी सपोर्ट करता है। मेरा तो अपना गाड़ी भी नहीं है, आधा मेरा तनख्वाह उस गाड़ी, मेरा अपना पुरखों के जमीन को बापू के नाम पे दान करके मैं महात्मा गांधी चला रहा हूं। इस महात्मा गांधी सेंटर में हमारे 9 गांव है, उसमें उस सबसे गांव के पिछड़ा हुआ सबसे अभी बैकवर्ड गांव है, उसमें HONG एशिया का सेकंड लार्जेस्ट गांव है, बहुत ही गंदगी की जगह है, डर्टी गांव है। उसमें मेरे अपने पुरखों का जमीन, गांव के बीच में एक छोटा सा हेल्थ यूनिट चला रहा हूं 10 साल से।
एक छोटा सा लाइब्रेरी चला रहा हूँ, उससे जो अपना बच्चों का जो ताकि स्टूडेंट लोग वहाँ आए, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी सेवा केंद्र हम चला रहे हैं, जो भारत सरकार का इनिशिएटिव है, उससे और IIT से मेल मिलाप करके। उसके बाद में हम फार्मर साहब, हमारा क्या होता है कि 9 गांव, जो पहाड़ी वाला गांव जो सब्जी उगाता है या कुछ फल फूल जो उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ले जाने के लिए 3 घंटा या 2 घंटा लग जाता है, आने जाने में मिलाकर 5 घंटा लग जाता है। वो बेचता भी नहीं है, फिर सारा बर्बाद हो जाते हैं, या तो जानवर को खिला देते हैं या तो अपना आप वो सड़ा हुआ मिलता है। तो ये फार्मर साहब में हमने क्या किया, हमारे गुवाहाटी और कलकत्ता से एक एंटरप्रेन्योर है, उनके साथ मिला के एक फार्मर साहब, उसके जितना भी जो किसान थे उनका थोड़ा सा आमदनी 1 केजी आधा केजी आगे सब्जी मिलता है, वहीं आके वो बेचता है, उसे हम 10% मार्केट प्राइस देकर हम खरीद लेता है और उसको कोल्ड स्टोरेज में रखता है और उसको ड्राई करने के लिए हमारा साधन है। और वहां में जो लोकल होटल है, एक सप्ताह में एक बार गाड़ी ले जाते हैं, एक फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हेड पर जो भी होटल है वही वो ले लेते हैं, या उसको ईटानगर या गुवाहाटी तक ले जाते, फिर राजधानी से लेकर के आगे कराते हैं। और अभी तो आपको सुन के अच्छा लगेगा, हमारा साथ बैठे हुए अभी मैं आऊंगा, जो मेधावी यूनिवर्सिटी उनके साथ में एक, क्योंकि उस गांव में हम देखा गया है, आपने बहुत युवा की बात किया है, दुख की बात है, हमारे हिंदुस्तान में 2 भाग में बट गया है, आप माने ना माने, एक इंडिया हो गया है, बेंगलोर वाले, दिल्ली वाले, गुड़गांव वाले, एक हो गया भारत, पीछे रह गया हम लोग, रेगिस्तान में, पहाड़ में, जंगल में, हमें बहुत फासला है, दूर है, दिल से तो दूर नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट की ओर से, फैसिलिटीज की ओर से। तो हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए मेधावी वालों ने स्किल की, क्या होता है, हम युवाओं, आपको शायद पहले बार कुछ, मुझे पहले बार SHL IPS देख रहा होगा, वहां पे जो होते हैं ना, हमें दिल्ली आने के लिए जब मैं पहले बार आया, मुझे लगा कि मैं वाशिंगटन में हूं, क्योंकि बहुत दूर है। अभी तो थोड़ा, पिछले साल एयरपोर्ट खुल गया ईटानगर, वो अलग बात है। मेरे गांव से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आधा दिन, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से राजधानी ईटानगर में और 1 दिन, फिर ईटानगर से लेकर गुवाहाटी में और 1 दिन, फिर गुवाहाटी से लेकर के ट्रेन से जाकर के 2 दिन आधा दिल्ली, तो 5 दिन लग जाते यहाँ आने के लिए। हर कोई नसीब नहीं है कि फ्लाइट से चले। हम इसको मद्देनजर रखते हुए इसलिए महात्मा गांधी सेंटर खोला। मैं बहुत आभारी हूँ मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हमारे युवा में, इसलिए युवा के तौर से और से मैं बोल रहा हूँ, हम पहाड़ों में रहने वाला, चाइना बॉर्डर के सामने में हम देखते हैं, चाइना वाला के पास बुमला लास्ट जो चाइना बॉर्डर का उसका आर्मी पोस्ट, वहां से देखता था तो पूरा ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, पूरा फ्लाइटिंग लेन हो रहा है, हाईवे है। हमारे साइड में हम गोरे गड़ा से 400-900 के लाके चलो डेवलप तो हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हुआ, तो जिसके कारण वहाँ ना नौकरी का इतना ज्यादा साधन है, ना हर कोई रोबिन हुड बन नहीं सकता। हम तो बिल्कुल पढ़ाई में रुचि रखता था, बहुत मेहनत किया जिंदगी में, बहुत कष्ट सा हो तो आगे निकल गया, लेकिन हर कोई तो नहीं हो सकता है। तो जिसके कारण आज NCR में भी रिकॉर्ड है, हमारा वहाँ का युवा लोग आत्महत्या बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में लोग हैं, स्पेशली युवा हैं। उसके बाद ये क्राइम की दुनिया में सब लोग जा रहे हैं, कितनों को हम अरेस्ट कर रहे हैं, चोरी कर रहा है, ये कर रहा है। फिर सबसे दुख की बात है कि ड्रग एडिक्शन बहुत ही ज्यादा उसमें उभर रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा था अपना बॉबी को भी और अपना कुणाल को भी, जो अपना CI काउंसिल इंडिया को भी, हमारा आप मुझे शायद भगवान ने भेजा होगा कि आज मुझे ऐसा एक फोरम मुझे मिल गया, CI जो काउंसिल इंडिया और मेधावी यूनिवर्सिटी की, इस बापू के सेंटर पे जो हमारे पास हॉस्पिटल है, छोटा सा हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी है, चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर है और अटल बिहारी वाजपेयी सेवा केंद्र है। उसमें जो भी प्रॉब्लम होता है हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो IIT दिल्ली वालों से हम कोलैबोरेट करा के कि कोई भी अगर गांव में पानी आता तो वो बता देता है, फिर वो सारा इमीडिएट उसका जो भी इंजीनियरिंग उसको जो डील करता है, उसको जो ठीक करने वाला उनके पास चले जाते हैं, फिर वो फटाफट उसको करा के कर देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट ये जो है ना, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी उनका ग्रैंडसन पुरुषोत्तम विक्रम वाजपेयी भोपाल से,
उन्होंने जो पता चला कि कोई एक ऐसा आईपीएस अफसर है पागल अपना जमीन भी दे दिया, घर भी दे चला रहा है, मेरे पास आया, सर हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने वो रन कर रहा है। और लाइब्रेरी को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने वो भी अपना वहीं से तनख्वाह दे करके वहाँ का एक शिखर, एक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ का उसको उसमें वो सारा करा रहा है। फिर अपना चिल्ड्रन सेंटर, बच्चे लोग नसीब सिर्फ फिल्म में कभी कभार देखता है कितना चिल्ड्रन पार्क ये वो, हमने अपना जमीन उसमें चिल्ड्रन पार्क भी बना के वो कर रहा है। अब वो मेधावी यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने एमओयू साइन किया है, वहाँ में देखो हमें रास्ता बनाने में, वुडन फर्नीचर बनाने में, छोटे छोटे चीज के लिए हमें बिहार से, बंगाल से, असम से ले आना पड़ता है। युवा वहाँ में पी के बैठा हुआ है, कोई आत्मा कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं चाइना में बाप जी चले जाए, वहाँ में बहुत अच्छा है। तो हमें अपना देश को संभाल के रखना है, उसे वहाँ जाने नहीं देना है, युवाओं को राह देना है, उम्मीद देना है। तो इसीलिए हमने एक संस्था जैसा, उन्होंने थोड़ा सा बताया हेल्पिंग हैंड, मेरा जिंदगी का जितना भी पैसा कमाया, जो पे आधा पे उसी में जाता है, सारा करके एक छोटा सा एनजीओ खोला मेरे साथ, मेरे लाइक माइंडेड जो पहाड़ से, दिल्ली से आईएएस, आईपीएस, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, एंटरप्रेन्योर, इवन हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर भी हमारा उसमें जुड़े हुए हैं, अमेरिका में भी मेंबर है, ताकि एक मिल करके हम एक छोटा सा खोल के एक नई उमंग, नई ऊर्जा, और मुझे पूरा विश्वास है काउंसिल इंडिया वाला जोड़ लिया है। आप ये युवाओं का जो थोड़ा सा बताया आपको, उसमें हम एक छोटा सा आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के उन पहाड़ों के युवाओं की तरफ से कि काउंसिल इंडिया वहाँ में एक, और मेरा भी स्किल हम मिल करके एक छोटा सा काउंसलिंग फॉर डिस्ट्रेस यूथ एक एक्सपेरिमेंट पे खोलते हैं। हम आपको जगह दे देंगे, आपका लेवल जो होता है मे बी फिक्स टाइम हो करके एक्सपेरिमेंट शुरू कर दो आपका सीएसआर का अंदर में, ताकि एक आपका भी अच्छा प्रोपेगेंडा भी होगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने सिर्फ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जितना भी इंडस्ट्री है, जितना भी जो उद्योगपति है, सब लोग बैंगलोर, दिल्ली, गुरुग्राम हर किसी के लिए करता है, कोई नहीं जाते बाहर में। क्या मिलेगा आपको वहां जाके? ना पब्लिसिटी मिलेगा, ना आपको पैसा मिलेगा। तो हम उनको दिल से, दिल से हम शुक्रगुजार है कि मेरा भी जैसा जिन्होंने उस दूर दराज पहाड़ों में अपना देश के एक हिस्सा को उन्होंने नहीं भूला है। और मुझे हर कोई बोलता है रोबी ये तुम हमेशा क्यों नोटिस बार बार क्यों बोलता है? मैं राष्ट्रपति जी को भी मैंने बोल रहा हूँ सर, अगर परिवार में कोई छोटा सा बच्चा अपना आप को असुरक्षित महसूस होता है, बाकी बच्चे के साथ आगे जिंदगी में नहीं कर पा रहा है, उसको थोड़ा सा हाथ बताना, क्या ये मैं गलत कर रहा हूं? नहीं, उनको भी जिंदगी में जीने का हक है, इस देश में उनको भी आगे बढ़ने का हक है। आगे बढ़ने का हक तो है, लेकिन सरकार तो कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी सरकार के इनिशिएटिव में भी देयर आर लॉट ऑफ गैप जो है ना, जो नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हम हेल्पिंग हैंड जो कर रहा है, 1 मिनट हम करते हैं, हर साल हमें 3 करोड़ कोचिंग इंस्टीट्यूट से सीएसआर फंड से अलॉट होता है। उसे हम सारा नोटिस पहाड़ों, लद्दाख के लेकर के बामा बॉर्डर, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, त्रिपुरा, सबको हम मेरे साथ 4.5 मिलियन युवा जोड़े हुए, सारा संस्था जोड़े हुए, सारा वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जोड़े हुए, उनको सारा हम उनको एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, उसमें मेंबर हम है या एम्बेसडर है, इनकम टैक्स कमिश्नर है, 10वीं क्लास पास, 12वीं क्लास पास और ग्रेजुएशन जिन्होंने अच्छा मार्क ले आया हो, और जो गरीब हो वो गरीबी हम उसका डीएम से कंफर्म करेंगे, हाँ उसका इनकम ये है या नहीं, और उसमें से 30% हम पहाड़ों लड़कियों के लिए हमने उसको रिजर्वेशन रखा हुआ है, और 15% इस देश के लिए जिन्होंने शहीद हो गया उनका बच्चों के लिए रखा हुआ है। इस 300 लाख में से हर साल हमें 40 से 50 हमें यूपीएससी में, आईआरएस, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विस में इस स्कॉलरशिप हम उनको वहां से या दिल्ली ले आते हैं, उनका रहन सहन, मेडिकल, इमोशनल काउंसलिंग अभी तो हम ही करते हैं, पूरा बोल के कभी कभी पूरा वो सूख जाते हैं ना, अभी आई एम श्योर कि ना मेरा विल प्लस आपका काउंसिल हेल्प करेंगे, तो करा के मन ये मैं इसलिए राष्ट्रपति जी को भी बताता हूँ, मैं अपना होम मिनिस्टर को बताता हूँ, सर हम सिर्फ सरकारी तो कर रहे हैं, नो डाउट इन दैट, उसमें हमें नोटिस वालों सरकार ने बहुत अटेंशन दिया है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन और भी करना बाकी है, और सिर्फ सरकार से नहीं होगा। हम लोग भी जैसा आप लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, आप लोग ओएनजीसी वालों ने जो इस कहानी को सुना है, ओएनजीसी का मुझे सीईओ आकर के मुझे लकड़ का वो बना हुआ था 8 रूम,
उसको मैंने दे दिया, इस लाइब्रेरी चला बारिश आने लग गया, फोटो लेकर के मैं इधर सबसे मांगता रहा। जब मैं वहां पे पहुंचा यूएन कमांडर पोस्ट के लिए 6 महीना में, प्लीज फॉर गॉड सेक आप डोंट ट्राई टू ब्रीड लाइक रैबिट्स। CIA रोहित भाई, देवेंद्र एंड शिवम, डोंट ब्रीड लाइक रैबिट्स। एक पायलट प्रोजेक्ट करो, मेक इट एग्जांपल, ताकि हम अपना राष्ट्रपति को दिखा सको। बी ए लाइक ए लायन। एक प्रोजेक्ट अच्छा से करो, इसलिए मैं आई ऑफर यू कि आप चाइना बॉर्डर में एक तुम्हारा काउंसलिंग वाला एक खोलो, हम रूम भी चार्ज नहीं करो। ये जो आप कर ही रहा है तो आपको सारा जहां भी आप कर रहे थे जो एक्टिविटी होता है इसने किया हुआ है। और मेरे छोटा भाई और दोस्त दुलानी नहीं आ पाए हैं, बीमार है। मैं इस संगठन पे एक बात से मैं कहूंगा, मैं तो आई एम हेल्थ फ्रीक। सारा मेरा बैच में आई डीजी रैंक हूं। सबका सब या तो बाल उखड़ गया है, या तो इतना मोटा है, या तो दवाई तुम पॉकेट लेके चलता है, या तो 2 घंटे बैठना है, हमें बाथरूम भागना है। कारण क्यों? हमारा वी आर सिक कंट्री, वी आर सिक कंट्री। मैं मानता हूं अगर आप कोई भी चीज अगर आप बीमार है ना, तो आप अपना आप के लिए बोझ है, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोझ है, देश के लिए बोझ है, मानवता के लिए बोझ है। सो यू मस्ट मेक श्योर दैट जो प्रवेश को बताना कि तुम जिंदगी में कितना पैसा कमाओ, कुछ भी कर लो, अगर तुम बीमार है ना तो तुम्हारा पत्नी भी तुमसे एक बार बोर हो जाएंगे। सो यू मस्ट टेक केयर एंड दिस अप्लाइज टू रोहित, बॉबी, हिमांशु, शिवम एंड ऑल ऑफ यू, देवेंद्र आल्सो, कि आप अगर आगे चलना चाहते हैं तो आई गेट अप, आई डोंट लेक्चर। लोग सोचते हैं अरे आई लॉस्ट 9 kg, इंजरी हो गया था आंख में खेलते खेलते, गेट अप एट 6 AM, पूरा तंदन तप्पर मार मार के अपना सुबह जाग जाता हूं, जाकर के कम वॉट में। उसके बाद में मेक ए 4 राउंड अपना वार्म अप करके थोड़ा सा गर्मी में 4 राउंड चक्कर मारो, 3 गेम वार्म अप करो, बैडमिंटन खेलो, काम डाउन योगा, बस 1.5 आवर। उस समय में दुनिया का कोई भी, मैं मिसेस को भी बोलता हूं, इस समय में आने लाइफ एंड डेथ का ट्रीटमेंट तो मुझे मत बुलाना। उसी में मेरा जिंदगी देखो, तुम सामने जितना तनाव हो क्या है, ये पुलिस वाला होता है, ये मार दिया, वो मार दिया, ये डेथ हो, हम तो होते रहे जिंदगी में। 7 जिले का कप्तान रहा हूं, 8 जिले यूएन में रहा हूं, ऑलमोस्ट 14.5 years में जिला में रहा हूं, ऑल द टाइम रनिंग अराउंड, मार पीट ये वो, लेकिन एक टूटी की दवाई भी नहीं खा रहा भगवान का आशीर्वाद से। कारण दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सुबह 1.5 hours को, चाहे मैं अमेरिका में हो, लंदन में राष्ट्रपति के साथ जो हम लोग एयरफोर्स 1 में जाके जो हम लोग विदेश में चलते थे, सुबह में हम अगर 7 बजे प्रोग्राम है तो 5 बजे उठ करके 1.5 hours तो करना है। उठो, जागो, कुछ करो। ये मशीन जो है ना आप रखेंगे ना तो रद्दी होगा ही होगा। और उसके बाद में बता सकता हूँ, खास तौर से यूथ लोग इतना पिज्जा उजा खा के इतना मोटे मोटे सब लोग बैठा हुआ है, अगर आप एक बार इसको बना लिया ना, उसके बाद सुबह उठा, नहा लिया, ये कर लिया, उसके बाद नहा के करो, तुम निकलो तो मुझे लगता है आई एम स्टिल स्वीट 16-year boy, full of energy, स्माइलिंग फेस, जिंदगी में और आगे बढ़ने के लिए जो ताकत रखता है। कारण एक्सरसाइज, कारण पॉजिटिव थिंकिंग। जिसको भी मानते हैं उतने बस उस प्रभु को थैंक यू, और एक दिन दिया है, जिंदगी में क्या रखा है, इट्स योर हेल्थ। आपका दुख सुख में हो या मेरा आपका बीवी और योर हेल्थ। इफ यू हैव अ गुड वाइफ और गुड हस्बैंड एंड इफ यू हैव गुड हेल्थ, आई थिंक दुनिया के कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकता है। So with this few words, my salute and congratulations to all the team led by Mr. Bobby Thakur, Devendra Saini, Shivam Dixit, and all the I would say the enlightened, ignited persons. अपना जो आया है डॉक्टर DS चौहान, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने बहुत आइडिया हमें भी दे दिया है। इग्नू से प्रमोद मेहरा जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें चाहिए बिकॉज एजुकेशन इज द फाइनेंशियर फॉर ऑल इल्स इन सोसाइटी एंड योर काउंसलिंग इज पार्ट ऑफ दैट होलिस्टिक एजुकेशन जो अपने भारत माँ को और आगे ले जाएंगे। और आखिर में ये मैं कहूंगा, बापू ने जो कहा है,
अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हो, बी द एजेंट ऑफ चेंज, बी द एजेंट ऑफ चेंज। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। Everybody, please settle down. It's humble request to everyone. मुझे नहीं लगता कि मैं सर की काबिलियत की तारीफ कर पाऊंगी, तो अगर आप सबको लगता है कि सेशन उनके शब्दों ने हमें इंस्पायर किया है, तो जोरदार तालियां हो जाए। Come on everyone. Right, Dr. Dipendra Singh Chauhan. With a huge round of applause, everyone. Now I request our CI leadership to please present a token of appreciation to Mr. Sitaram Anjelu Parimi, General Manager, Medhavi Skills University. And we give Mr. Sitaram Parimi a huge round of applause. Thank you so much, General Manager, Medhavi Skills University, for joining us today. And we would also request Mr. Sunil Kumar, so please join us. From Medhavi Skills University, thank you for joining us today, and thank you so much for gracing this beautiful event with your presence. Here is a small token of appreciation for your precious time you have given us today. We are more scalable, more skillful. So good morning everyone. Let's have a louder good morning for India. Good morning India. Great. Respected guests, experts, students, colleagues, friends from media, I extend a warm welcome to each one of you. Your gracious presence is of immense value to this momentous occasion. Today marks the historical signing of partnership between Counsel India and Medhavi Skill University. Thankfully, its operations. So we express our heartful gratitude for your guidance and inspiration, sir. Now, the thoughts shared by Commissioner Sir Shri Robin Hibuji are truly valuable to us. You talked about inspiring story of lady, you talked about your own inspiring story. You talked about Gandhivad, Rashtravad, the great thought processes. You talked about Chingari jo aapke dil mein hai. To contribute this Chingari to help society to build this nation better. You talked about corporate visionary changes India need. And of course your valuable feedback that instantly that we are getting with you. Of course we will work on them, sir. And we are also on the same page. 3 to 5 years. His way of looking at things is in between Counsel India and MSU is propelling the nation towards 5 trillion economy by scaling up for their mass level skill development initiatives. Today I want to say that Counsel India is ready to action by adding counseling skills for emotional well-being, working together with NSDC. We are excited to serve the nation, partnering with Delhi Police. Humans generally think 60,000 thoughts in a day. How many? 60,000 thoughts. And out of those 60,000 thoughts, 80% thoughts are negative.
but with this partnership, thought creation from 20% to 80%. So we aim to reverse the equation to 20% healthy and the positive thoughts. Are we